Hello everyone, very good evening to all of you. Welcoming you all once again to Plutus Academy. Hoping that you all are fine and doing well with your studies and happy with your family and doing well. Keep revising. So, as you all know that this is the crash course for CDS, Combined Defense Services, which is conducted by one of the prestigious institution of India, UPSC, and this exam is also one of the prestigious examinations of India. तो अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का, भारतीय सेना की वर्दी पहनने का, तो आप भी इन क्लासेस को ज्वाइन करके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने सपने को साकार इंडियन एयर फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी में जाके। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो बात करें आपके सीडीएस एग्जाम की, तो जहां तक आप लोग जानते होंगे सीडीएस का एग्जाम जो है दो इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। एक है IMA, इंडियन मिलिट्री सर्विसेज। सीडीएस का एग्जाम दो टाइप से होता है, वन फॉर IMA एंड सेकंड फॉर other institutions. If you are looking for the IMA examination, then you have to go through with the maths, English and GS. And here you just have to concentrate on the English and GS. यहाँ पे आपको सिर्फ और इंग्लिश और जीएस में जाना फोकस करना होता है। इसके लिए डिटेल क्लासेस हमने पहले की वीडियोस वगैरह अपडेट किए हुए हैं, जहां पे आपको फुल इंफॉर्मेशन दी गई है इस एग्जाम के बारे में, तो आप वहां पे जान सकते हैं। तो अगर हम जीएस की पोर्शन की बात करते हैं, तो आई एम योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई विल गाइड यू फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है आपके सामने मैं लेके आया हूँ क्या, one of the most important chapter which is named as human disease, and from this chapter every year 2 to 3 questions has been asked by the UPSC in various examinations. So आज ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। मानव रहित ह्यूमन डिजीज क्या है, डिजीज की डेफिनेशन क्या है, डिजीज को कैसे डिफाइन किया गया, कौन कौन सी डिजीज होती है, हमें कौन कौन सी डिजीज पर फोकस करना है। सो लेट्स बिगिन। तो आप लोग जानते होंगे कि ग्लोबली देयर इज एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन describe disease, said that disorders, diseases क्या है, diseases are the disorders related to the physically, mentally and socially disorders are known as the diseases. WHO कहते हैं, according to the WHO, any person who have disorders related with their physical terms, mental terms or social terms. भाई physical terms तो आप समझते हो, if anyone have the physical disorders, disabilities, known as he is a physically disabled है, तो वो भी क्या है, this is the type of one disease. If anyone is mentally retardation, mentally ill है, sick है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेंटली डिजीज का शिकार बोला जाता है, मेंटली डिसऑर्डर्स। सोशली कौन होते हैं, ऐसे लोग जो सोसाइटी क्रिटिसिज्म करते रहते, सोसाइटी को क्रिटिसिज्म करना। आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे चाचा अंकल फूफा ऐसे लोग मिलेंगे जो हर वक्त आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं,
always they are thoughting like a negative person. So according to the WHO, there are three kind of disorders, namely physically, mentally, and socially. If any kind of disorders you have, then you are sick. You have a disease. It can be either physical, mental, or social. Okay. After that, WHO said that all the diseases are of two categories. One is congenital disease, congenital or genetic diseases, and second one is acquired disease. Okay, what is congenital or genetic disease? Diseases which we get, by birth. ऐसे रोग, ऐसी डिजीजेस जो हमें जन्म से ही मिलती है, जन्मजात डिजीजेस होती है. एग्जाम्पल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, Klinefelter syndrome, etc. And there is one more disease is known as diabetes type 1. Acquired disease क्या होती है? Which we get by our lifestyle. ऐसी डिजीजेस जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमें मिलती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड डिजीजेस कहा जाता है. एक्वायर्ड डिजीजेस are of two types. One is infectious disease. Infectious and non-infectious. Infectious or non-infectious diseases. Okay, infectious diseases are those diseases which infected our body by the bacterial, viral, yeah, through the viruses, through the protozoas, protozoal disease, fungal diseases. These are the infectious diseases which can be infected our body through any bacteria, virus, protozoa, or fungi. Non-infectious diseases are those diseases which either not a genetic disease nor it is an infectious disease. Example of non-infectious disease is cancer, diabetes, itai. These are the non-infectious diseases. या disorders, ऐसे disorders, ऐसी diseases जो बिना किसी संक्रमण के, विदाउट एनी इन्फेक्शन हमारी बॉडी को बीमार कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है.
There is some another explanation about genetic disease. Genetic diseases क्या है? Genetic diseases are chromosomal or gene-based diseases. ऐसी डिजीजेस जहां पे डिसऑर्डर हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर है या जीन्स के अंदर है, जिसके कारण हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विकार आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, दैट आर नोन एज genetic diseases. Now, what is chromosomes? What is chromosomes? So chromosomes क्या है? In the human body there are 46 chromosomes have been found, or we can say 23 pair of chromosomes are found in human body. Always present in pairs. Always present in pairs. ये हमेशा जोड़े में मौजूद होगी, कभी भी सिंगल नहीं मिलेगा, ठीक है? Always present in pairs. ये क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स को, they carry genetic characters. किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, किसी भी फंजाई का, किसी भी एल्गी का जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, ऑल आर डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम्स. So the number of chromosomes are 23 pairs in human body. These are two types. One is autosomes and second is allosomes. Autosomes and allosomes. Autosomes are same in both male and female. ऑटोसोम्स जो होंगे वो बोथ मेल एंड फीमेल में क्या होंगे? सेम होंगे. एलोसोम्स आर डिफर इन बोथ मेल एंड फीमेल. मेल के अंदर एक्स एंड वाई, फीमेल के अंदर एक्स एंड एक्स. ओके. एलोसोम्स क्या होंगे? मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग होंगे. एलोसोम्स आर आल्सो नोन as the sex determining chromosomes. इनको सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है भाई एलोसोम्स की वजह से ही. मेल फीमेल, यहाँ एक्स एंड वाई है, यहाँ पे एक्स एंड एक्स है. अगर मेल से वाई आया और फीमेल से एक्स आया तो बेबी कैसा होगा? मेल. जाइगोट विल बी मेल. इधर से भी एक्स आया, इधर से भी एक्स आया, तो ये क्या होगा? फीमेल चाइल्ड होगा. बच्चा कैसा होगा? फीमेल होगा. सो इट्स डिपेंड्स ऑन द एलोसोम्स. अब क्या होगा? कुछ डिजीजेस ऐसी होंगी जिनको एलोसोमल डिजीज बोला जाता है, एलोसोमल डिजीजेस बोला जाता है. एंड अनदर इज ऑटोसोमल डिजीज. ऑटोसोमल डिजीज. एलोसोमल डिजीज में आप लिख सकते हैं लाइक कलर ब्लाइंडनेस. यहां पे ऑटोसोमल डिजीजेस में आप लिख सकते हैं पटाउ सिंड्रोम, ऑटोसोमल में पटाउ सिंड्रोम.
ऑटोसोमल डिजीज जो होंगी बोथ मेल एंड फीमेल में होंगी, एलोसोमल डिजीज होंगी या तो सिर्फ और सिर्फ मेल को इफेक्ट करती है या फिर फीमेल्स को इम्पैक्ट करती है। दैट्स होपिंग दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ गोइंग अहेड, बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बैक्टीरियल डिजीजेस, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीजेस। इन द बैक्टीरियल डिजीजेस, not the bacterial diseases, all the infectious diseases, one should have a pathogen, a vector. एक यहाँ पे क्या होगा, पैथोजन क्या होगा, there is a pathogen, and second one is vector. ये क्या है, ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। वेक्टर क्या होता है, कैरियर है। वेक्टर क्या है, इट इज द carrier by which the infection comes to our body, like mosquitoes, flies, sandflies, xenopsa flies, water, food, air, water droplets, these all are the carriers. सिंपल सी चीज है कि अगर आपको दिल्ली टू बनारस जाना है, दिल्ली से बनारस जाना है, तो जाएगा कौन, आप, यू आर द पैथोजन। अब आप जाते कैसे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं, बाय प्लेन जा रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वेक्टर। तो जितने भी रोग हैं, जितने भी इंफेक्शंस हैं, वो किसके थ्रू जाएंगे, वेक्टर के थ्रू किसी दूसरी बॉडी में जाते हैं। पैथोजन क्या है, वो इन्फेक्शन है, लाइक बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोआस हो गए, या फिर फंजाइस हो गए। ऑल दिस थिंग्स आर पैथोजन। वेक्टर्स आर द कैरियर्स which carries the infection to another. So now also there is symptoms, we will talk about the symptoms and vaccines and tests of the various diseases, how to diagnose and how to prevent from this disease with the specific disease. So there are some bacterial diseases like typhoid, pneumonia, syphilis, plague, leprosy, tuberculosis, cholera, diphtheria, and tetanus. These are the 9 bacterial diseases which we have to study. We have to study about these diseases. About these diseases. These are the most important diseases of through the infection of bacteria. Okay, so now let's begin. First of all, about the typhoid. It is also known as the enteric fever. This is known as enteric fever. इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, एंटेरिक फीवर मींस आंतों का बुखार, आंतों का बुखार या फिर आंत्र ज्वर। इट मींस, सिंपल सी चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा, दिस बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड आवर इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन को इंपैक्ट करती है। आता कैसे है, कौन है आने वाला, कौन है, सैल्मोनेला टाइफी। दिस इज द बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट आवर बॉडी। नेम ऑफ द पैथोजन इज सैल्मोनेला टाइफी। It comes from it come in our body through the contaminated food और water। या तो contaminated food से आता है या contaminated water से आता है। दूषित भोजन, दूषित जल लेने से टाइफाइड हमें हो जाता है। उस जल के अंदर, उस भोजन के अंदर मौजूद जो बैक्टीरियाज हैं जिनका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, वो आते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं और मेनली क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को, हमारी आंतों को इन्फेक्ट करते हैं और आंतों में क्या हो जाते हैं, अल्सर्स, अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन। आंतों के अंदर छाले हो जाते हैं, आंतों में छाले होना। इसका दूसरा सिम्टम क्या है, रैशेस ऑन बॉडी, रैशेस ऑन बॉडी, व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग।
टंग पे व्हाइट कोटिंग का आना, एंड अनदर इम्पैक्ट इज इन लार्ज लिवर एंड स्प्लीन। इसमें लिवर और स्प्लीन दोनों का साइज जो है वो बढ़ जाता है, लिवर एंड स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, टाइफाइड ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। Pathogen is Salmonella typhi. Vector is contaminated food and water. To diagnose the typhoid, doctors do a test named Vidal test. एक टेस्ट किया जाता है जिसको विडाल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, इट मींस यू हैव टाइफाइड। ये तो आम बुखार है, सभी को हो जाता है। सिम्टम्स क्या है इसके? ऑर्गन्स का डैमेज हो जाना, इंटेस्टाइन का डैमेज हो जाना, इंटेस्टाइनल प्रोक्रोशंस, आंतों में छिद्र होना, छिद्र हो जाना, छेद हो जाते हैं, हाथों के अंदर छेद हो जाते हैं, अल्सर्स टाइप चीजें हो जाती हैं। इसमें क्या होगा? सस्टेन फीवर, लूज मोशंस, वॉमिटिंग एंड इफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डिजीज है टाइफाइड, इट अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीज। इसीलिए डॉक्टर बार बार बोलते हैं, ऑलवेज डॉक्टर एडवाइस दैट ऑलवेज ईट द वेल कुक्ड फूड। अच्छे से पका हुआ खाना खाइए, अच्छे से पका हुआ खाना खाइए, ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर हैं तो वो किल हो जाए। नेक्स्ट आता है कॉलेरा। ये कहां आता है, कहां किन लोगों को होता है? in the area of excess flood, अत्यधिक बाढ़ वाले क्षेत्रों में जहां पे लगातार फ्लड आती रहती है, पूर्वी बिहार, बिहार वाले एरियाज में, पश्चिम बंगाल वाले एरियाज में, जहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, पूर्वी यूपी में, वहां पे हैजा या कॉलेरा से काफी ज्यादा लोग संक्रमित, ठीक है। अब ये कैसे होता है? वेक्टर इसका पैथोजन क्या है? विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा। वेक्टर, इसका वेक्टर क्या होगा? सेम, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, contaminated food and water से होता है, contaminated food and water से होता है। दूषित जल, दूषित भोजन से। अब होता है कि जो अत्यधिक बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, अत्यधिक बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, द एरियाज इफेक्टेड बाय द फ्लड, फ्लड की वजह से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जो एरियाज प्रभावित होते हैं, इफेक्ट करते हैं, वहां पर क्या होता है? इस तरह के वायरसेस का जन्म होता है। These bacteria are born and on those places where the flood is comes every year, हर साल जहां पे क्या होती है? लगातार बाढ़ आती है, एक्सेस फ्लड आती है। It affects the digestive system। ये क्या करता है? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, लूज मोशंस, डायरिया, ठीक है, ये सारी चीजें, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, ये सारी चीजें होने लग जाती है, जिसकी वजह से ड्यू टू दैट थिंग्स सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। The incubation period of this disease is 2 hours to 5 days. Approximate incubation period is that period by which this disease impacts our body. The minimum time is 2 hours and maximum time is 5 days. Okay? इसकी वजह से क्या होगा? पानी की कमी शरीर में, डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन हो जाता है, इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, it affects the digestive system. According to the WHO, every year 30 to 50 lakh people are infected by these diseases, and out of which near about 1 lakh people dead every year. लगभग 1 लाख लोगों की इससे मौत होती है. ठीक है, नेक्स्ट चलिए. नेक्स्ट डिजीज इज न्यूमोनिया. It found it infects only childs and dogs. ये जो रोग है ये या तो बच्चों में होगा या कुत्तों में होता है. मैक्सिमम दिस डिजीज इज affected the dogs. ये सबसे ज्यादा कुत्तों को ही प्रभावित करती है. ठीक है, इसमें होता क्या है, you can see this is the trachea, which is also known as windpipe. Okay, this is known as bronchi. These structures are known as bronchiole. ओके, होता क्या है इसके अंदर जो एल्वेओली है, स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द लंग्स. ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है बलून जैसे, जिनका फंक्शन कैसा होगा, लाइक बलून्स. बलून की तरह इनका फंक्शन होता है. व्हेन वी इनहेल दीस एल्वेओली ब्लोस, ये फूलती है, और व्हेन वी एक्सहेल they became in their original shape. न्यूमोनिया के अंदर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट इंफेक्शन है. वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की वजह से, वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होने वाला संक्रमण है, वाटर की वजह से होने वाला संक्रमण है. और इसकी वजह से क्या होता है, पस हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द पस डिस्चार्ज इन एल्वेओली. एल्वेओली के अंदर क्या होता है, पस भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है. ठीक है, येलो कलर का ब्लड, गाढ़ा ब्लड, प्लाज्मा. जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है. affects the respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, deficiency of O2, due to deficiency of O2, nails and lips became gray और blue. होठों और नाखूनों का रंग कैसा हो जाएगा, या तो ग्रे हो जाएगा या फिर ब्लू कलर हो जाता है. ठीक है, या तो ग्रे कलर के हो जाएंगे या ब्लू कलर के हो जाते हैं. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट्स इन द लंग्स. ब्लड क्लॉटिंग क्या करेगी, लंग्स में स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, इनहेल एंड एक्सहेल में प्रॉब्लम होगी. Next disease is plague, known as the Black Death. काफी खतरनाक डिजीज है.
plague, Black Death. Pathogen, Yersinia pestis और Xenophila fly. Xenophila fly या Yersinia pestis की वजह से होने वाला डिजीज है. वेक्टर इज रैट. वेक्टर कौन है? चूहा होता है. चूहा क्या करता है? ये लेके आता है हमारे किसी फूड को इन्फेक्टेड करता है, कट कर देता है. Hi, I'm Rashika from Transact Academy. हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई व्यक्ति इससे प्रभावित होगा तो उसकी बॉडी पर पहले रेड रैशेस आ जाते हैं, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं. These red spots convert into the black spots. Firstly क्या होगा? First appears क्या होंगे? Red spots होंगे. Then these red spots convert into the black spots, and after that some time it converts into the bubu. Bubu is the bubble-shaped structure. Bubble-shaped structure. इसी को क्या कहा जाता है? बुबो कहा जाता है. बुबो कहा जाता है. ठीक है. यहां पे क्या होगा? हाई फीवर होगा. ठीक है. इफेक्ट द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग मरते हैं. इन द ईयर 1665, in the year 1665, 1/4 population was died in UP. 1665 में पहली बार प्लेग फैला था. तब लगभग 1/4 जो वहां की जनता थी उसकी डेथ हो गई थी. 1/4 of the population has been died due to this disease. In the 1920s, it affects the Indian continent. इसने क्या किया? इंडियन कॉन्टिनेंट को इफेक्ट किया था. इंडिया में काफी सारे लोगों की, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें. That is the one of the most dangerous diseases of the world. Second one is tetanus. Tetanus. Pathogen is Clostridium tetani. Vector is dust, soil, metal. Okay, dust से, soil से, metal से ये impact करती है. डस्ट से, सॉइल से, मेटल से हमारी बॉडी में इंसर्ट करती है. और खासकर when the body has wounds. जब शरीर में घाव हो, जब शरीर पे कोई घाव हो, वाउंड हो, तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में इंसर्ट कर जाता है. ये हमारी बॉडी में इंसर्ट कर जाता है. ठीक है. इसके अंदर एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है. टॉक्सिक एलिमेंट हैव बीन फाउंड इन दिस बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज टेटानोस्पाज्म. टेटानोस्पाज्म. It attacks on the nervous system. ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बैंडिंग बैकबोन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बैंड आ जाएगा बैकबोन में, और पर्सन
is unable to stand. Unable to stand. A person can't be stand straight. Okay. Severe pain in chest and back. कमर में और छाती में काफी ज्यादा दर्द होगा. ब्लैक कफ, काली खांसी, ये सारी चीजें इसकी आती है. नर्वस सिस्टम में भी ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, ब्रेन आता है हमारा, स्पाइनल कोड आती है, स्पाइनल कोड एंड बैकबोन. ठीक है, ये तीनों चीजें इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है. टू प्रिवेंट दिस डिजीज देयर इज एन वैक्सीन नेम्ड DPT which belongs to diphtheria, peristalsis and tetanus. 3 डिजीजेस का कॉम्बो पैक लगाया जाता है इस वैक्सीन के अंदर, डिप्थीरिया, पेरिस्टाल्सिस एंड टेटनस. ओके, नेक्स्ट है सिफिलिस. सिफिलिस इट इज ए STD. तो फिल्म में सुना होगा ना 1983 में, एसटीडी को STD बोलता है. STD सभी लोग हंसते हैं. STD मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के कारण, ड्यू टू सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म this disease is transmitted to another body. The pathogen is Treponema palladium. Vector is urinary tract or sexual intercourse. When one female and male do the sexual activities, sexual intercourses, this disease is transmitted to the another body. Okay, it affects the skin of the human. It affects skin. It affects cancer on the penis, mucus patches in the mouth, blisters in the mouth, eruptions on the face, hyperlobatum. It also affects the lungs. It also affects the liver. Aortic aneurysm affects the small intestine. Affect the neurons, nervous system. Affects the nervous system, and in the nervous system it affects brain. It affects the brain. That is known as neurosyphilis. जो ब्रेन में होगी उसको न्यूरोसिफिलिस बोला जाता है. कैंकर is known as the primary syphilis. Secondary syphilis is eruption on the faces and patches on the mouth, and tertiary syphilis is it affects the liver, it affects the intestine, it affects the neurons. Next is tuberculosis, TB. It is a communicable disease which infect the other bodies through the air, water, soil, food, water droplets, through the cough, through the sneezing. छींकने से, खांसने से ये फैलता है. साफ खाना खाने से फैलता है. ठीक है, सेम हैंकी यूज करने से फैलता है. तो दिस इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज एट दैट टाइम. कम्युनिकेबल डिजीज है. दिस इज एन कम्युनिकेबल डिजीज व्हिच comes to the
comes through the MTB, Mycobacterium tuberculosis bacteria. एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोला जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इट ट्रांसमिट थ्रू द एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड। साथ खाना खाने से, सेम ग्लास में पानी पीने से, थ्रू द एयर आप खांसते हैं, छींकते हैं तो उसके ड्रॉपलेट्स अगर जाते हैं, कोई संक्रमित व्यक्ति है, गैर संक्रमित व्यक्ति के अगर ये होगा तो उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। सिम्टम्स क्या है? ब्लड थ्रू द कफ, खांसने के साथ खून आना। होता क्या है कि जो हमारा लंग्स होता है, it affects our lungs, mainly it affects our lungs, but sometimes nowadays the tuberculosis is affecting other organs of the body also, okay? There is a membrane around lung known as pleura. This bacteria eats the pleura. ये क्या करता है? प्लूरा को खा जाता है। It eats the pleura. That's why blood comes through the cup. जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। ब्लड बाहर आता है किसके थ्रू? प्लूरा के थ्रू ब्लड आने लग जाता है और ये पता चलता है कि व्यक्ति को टीबी। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। Treatment is tough. Treatment is tough to crack. ये tough nut to crack है, काफी टफ होता है। क्यों? Because bacteria have the cell wall. इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स आर नॉट इम्पैक्टेबल ऑन। इसकी वजह से क्या होता है? जो मेडिसिन्स होती है, जो इंजेक्शंस होते हैं, जो वैक्सीन्स वगैरह होती है, वो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पाती है और ये डिजीज काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है। इट डैमेजेस द प्लूरा, अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब प्लूरा ही डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देयर इज एन वैक्सीन नेम BCG, बैसाइल कैलमेट गुआरिन। बैसाइल कैलमेट गुआरिन ये दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को, ठीक है। अच्छा, इस बैसाइल जो BCG है, BCG वैक्सीन है, इसके बारे में एक करंट इवेंट लिख ले कि तमिलनाडु स्टेट गिव्स डोजेज ऑफ BCG to the citizens of Tamil Nadu who are 50 plus of age, जो 50 साल से अधिक थे। किस लिए? टू प्रिवेंट द डेथ रेशियो ऑफ कोविड। कोविड की वजह से डेथ रेट को कम करने के लिए तमिलनाडु स्टेट ने क्या किया है? अपने स्टेट में, तमिलनाडु स्टेट में रहने वाले सभी 50 प्लस जो भी बुजुर्ग व्यक्ति थे, सीनियर मोस्ट पीपल्स थे, उनको क्या दिया गया? सीनियर मोस्ट पीपल को क्या दिया गया? BCG की डोसेस दी गई है ताकि वो प्रिवेंट कर सके, डेथ रेशियो को कम कर सके अपने स्टेट में। नेक्स्ट वन इज डिप्थीरिया। Pathogen is Carnibacteria. And vector is airborne. हवा के थ्रू ये जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या है? कफ, फीवर, स्वेलिंग इन थ्रोट, गले में सूजन, खांसी आना, छींकना, खांसना, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है।
You have to remember the pathogens and vectors of all these diseases. You have to remember all the pathogens and vectors which I told you, which I teach you in this session. Next one is leprosy. Leprosy, the pathogen of leprosy is Mycobacterium leproi. Mycobacterium leproi. Vector is skin and airborne. It attacks human body through the skin or through the airborne. It infects the skin. It infects the skin. It attacks on the nervous system. It attacks on the nervous system. ये क्या करता है? हमारे nervous system को attack करता है. Weakness in hand and legs. लोगों की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है. Mental retardation आ जाता है. Mentally retardation. Weakness in hand and legs. ठीक है? Blisters on skin. स्किन के ऊपर छाले पड़ जाना, ठीक है? एंड डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द ब्लिस्टर्स. और इन छालों से क्या होगा? पस डिस्चार्ज होता है. और इन छालों से क्या होगा? पस डिस्चार्ज होता रहता है. लगातार पस का डिस्चार्ज होगा. ओके, these are the 9 diseases from the bacteria which I have told you, which I have teach you in this session till now. Next are the viral and diseases from the viruses. ऐसी diseases जो वायरस से होती है, जो viral diseases है, जिसमें सबसे पहला आता है common cold. Common cold जिसका पैथोजन क्या है? rhinovirus है, and it is the group of viruses. It is the group of viruses. Vector is air. Through the air it attacks us and affects the upper respiratory system. Means our nose and throat. Nose का लाल हो जाना, red nose, red eyes, आंखों का लाल होना, water from eyes, आंखों से पानी आना, ठीक है? Sneezing, cough, and sometimes fever. Rainy nose, लगातार नाक से बारिश होना, पानी की बरसात होना नाक से. ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं. And it transmitted hand to hand contact disease, which is also known as hand to hand diseases, hand to hand contact diseases, or water droplet diseases. Water droplet disease. इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप? भाई अपने आप को एक तो आप लोगों से अलग कर ले, क्वारंटीन हो जाए, हमेशा अपने चेहरे को ढक के रखिए, सरफेस को डिसइंफेक्ट करते रहे. सेम लाइक कोविड-19 जैसा हम लोग करते थे. कोविड-19 के टाइम पे हम क्या कर रहे थे? कोविड-19 के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे? कोविड-19 के टाइम पे हम बार-बार हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, सरफेस को सैनिटाइज करना, मुंह को ढकने रखना, मास्क से कवर करके रखना, कवरिंग आवर फेसेस, अपने फेसेस को कवर अप करना. ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है? Wash and frequently disinfect contaminated objects and surface. Avoid touching your face. Always cover mouth and nose when sneezing and coughing. Isolate yourself until symptoms have passed. तो ये सभी सिम्टम्स हैं, ये सारे प्रिवेंशन ट्रिक्स हैं by which you can prevent yourself and your loved ones. Next is dengue, bone break fever या break bone fever. हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है. हड्डी तोड़ बुखार. It feels like that all the bones have been broken in this fever. It feels like that all the bones have been broken. हड्डियां सारी टूट चुकी है. Even after the viral attack has been passed,
there is pain in the bones also. बोन्स के अंदर फिर भी पेन रहता है. पैथोजन इज एर्बर वायरस. एर्बर वायरस पैथोजन क्या है इसका? एर्बर वायरस. एंड वेक्टर इज फीमेल एडिस एजिप्टी. The name of the mosquito is known as female Aedes aegypti, or sometimes we call this AE, or we can say is tiger mosquito, albopictus. Okay, this mosquito is also responsible for the various diseases like chikungunya, yellow fever, Zika virus also. This is also the vector of various diseases like chikungunya, yellow fever, and Zika virus. The symptoms of dengue is high fever, pain in joints, platelets down, chills, shivering, headache, rashes on skin, loss appetite, sore throat. These are the symptoms of this disease. And by this disease, thousands of people have lost their lives. बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं इसकी वजह से. ठीक है? There is some multiple variant of this disease also. Some attacks on the liver, some attacks on the lungs, some attacks on the heart, by which multiple organ failure have been done, by which a person can lose his or her life. Okay? To prevent this disease, you can drink coconut water. You have to do the liquid diet, take the liquid diet for some time, for some days, till this virus passes away from your body. And you can also use the goat milk, because it has keratin protein, which is helpful in formation of platelets. ये क्या करती है? It increases the number of platelets in our body rapidly. बहुत तेजी से हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर platelets काउंट को बढ़ाती है. And platelets are useful for the proper blood circulation, and blood clotting. ये ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लेटलेट्स वगैरह के काउंट को कम होने से, इफ आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स 8000 या 10K के आसपास आ जाती है, 8K या 10K के आसपास आ जाती है, तो क्या हो जाता है? हैमरेज हो जाता है. हैमरेज, जिसकी वजह से ब्लड कम्स थ्रू एनस, माउथ, nose, and sometimes from the eyes. ब्लड हमारे आंखों से आना शुरू हो सकता है, नाक से आ जाए, कान से आ जाए, मुंह से आ जाए, हमारे एनस से आ जाए, या हमारे जो जेनिटल एरियाज हैं वहां से आना शुरू हो सकता है. Or if you have any kind of wound or cut in your body, on your body, then the blood comes from that part also. And it is very tough to prevent it, to stop it. इसको रोकना बहुत impossible हो जाता है. That's why the doctor suggested that do not shave at the time of dengue. Prevent yourself from any kind of hemorrhage, any kind of accident. Otherwise, you will lose your life. Okay, so this is the dengue, one of the most dangerous disease in India. Chickenpox pathogen is variola zoster virus. Symptoms is high fever, itching and blisters, fatigue, थकान होना, बॉडी पर छाले पड़ जाना, लॉस एपेटाइट, भूख ना लगना, हेडेक, सर में दर्द, इचिंग, खुजली, सॉर थ्रोट, गले में सूजन, स्वॉलन लिम्फ नोड,
lymph nodes का सूज जाना, and it is communicable disease. It communicates from one person to another. ठीक है, it is communicate from one person to another person. एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाती है, इसको छोटी माता कहा जाता है, छोटी माता. इसमें क्या होता है, the blisters, rashes firstly appears on chest. सबसे पहले कहाँ, छाती पे, चेस्ट पे आते हैं. सबसे पहले रैशेस जो आएंगे चेस्ट पे आएंगे, फिर क्या होंगे, पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं. ठीक है, इट इज आल्सो अ वायरल डिजीज. ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ऑलवेज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, and if you like the class, if you like the content, if you like the explanation, then please share and like with all of your friends. To get the PDF, join our Telegram channel. Telegram channel को join कीजिए for the PDFs. You will find out the link of the Telegram channel from the description box. And thank you so much for being with me. Thank you so much for listening me. May God bless you. Okay, so see you in the next session. Till that time, thank you so much. Bye bye, take care. Jai Hind, Jai Bharat. Have a good day.